Hello everyone, welcome to Manuver. So in this video we are going to see the question from averages. If you find that this lecture is really helping you, then please pass this lecture to your friends and the people who need it. Okay, so let's begin with the discussion, guys. Raman had a bowling average of 10.8. Means what? That Raman is giving 10.8 runs and he is taking 1 wicket. So this is what it means. In the next match, he took 6 wickets for 33 runs. So his average got improved by 0.6. So average got improved means what? कि पहले वो 10.8 रन देता था, बट अब वो 10.2 रन ही देता है क्योंकि 0.6 से ये improve हुआ है. Okay? So find the total number of wicket he had taken. So we are going to do this question by using allegation. तो आई एम कंसिडरिंग दैट आप लोगों को बेसिक फेनोमेना एलिगेशन का पता है. सो लेट्स डू. तो ये 10.8 को मैं एक साइड यहां पे लिख रहा हूं. अभी ये सेकेंड मैच की बात कर रहा है तो क्या करूंगा, 33/6 फाइंड आउट कर लूंगा तो ये देगा आपको 5.5. ठीक है, तो एक क्वांटिटी यहां पे आपने लिखी, दूसरी क्वांटिटी आप यहां पे लिखेंगे, दैट इज 5.5. और इस 5.5 की वजह से इसका जो एवरेज है वो इंप्रूव हो जाता है और वो हो जाता है 0.6 से इंप्रूव होता है. मतलब ये 10.8 रन पहले देता था एक विकेट के बाद, अब ये इंप्रूव हो रहा है, मतलब ये कितना देगा, 10.2. अब हम एलिगेशन में क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. अब इन दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड आउट करोगे यू विल गेट 4.7. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10.8 10.2? तो दैट इज व्हाट, 0.6. सो नाउ व्हाट यू विल डू, दैट you have to find the ratio. So ratio if you will find, then what you will get, 47 raised to 6. Okay, तो ये अभी रिडक्ट नहीं होगा, so you can write as it is. अब मुझे पता है कि this 6 will correspond to this side and this 47 will correspond to this side. Okay, so what you can do further, if this 6 correspond to this side, then you can tell कि this 6 is corresponding to 6 wicket. What you have to find, wicket. So you can say that this 6 will correspond to 6 wicket. So I can also say what you have to find the total number of wickets. Means what, this plus this. So total number of wicket कितना हो जाएगा, रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 53. अगर मैं ऐड करूं तो 53. So now you have to find the value of 53 and you know that 6 will correspond to 6 wicket, then 53 will correspond to 53 wicket. So total number of wicket would be what, 53. So this will be your option number 2. So hope you are getting. If you learn something from today's discussion, please hit the like button, do subscribe our YouTube channel. Have a good day. Bye bye, take care.